आज हम फिजिकल क्वांटिटी कौन सी पढ़ेंगे? टाइम। हम देखेंगे कि हम टाइम को किस तरह मेजर करते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना भी सीखेंगे। टाइम हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टाइम को सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, मंथ्स में, इवन ईयर्स में भी मेजर करते हैं। लेकिन टाइम मेजर करने का एसआई यूनिट सेकंड्स है। हम टाइम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। वी कैन यूज स्टॉप क्लॉक्स, स्टॉप वॉचेस और पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग या रॉड से एक वेट हम हैंग कर देते हैं so that it can move freely. This pendulum is actually the mechanism of how clocks work. Now we'll see कि pendulum की oscillation और time period क्या होता है. When we have a pendulum in this position, resting position पे या equilibrium position पे, ये जब freely hang कर रहा होता है, तो what we can do is that I will displace it towards the right side and then I'll leave it ताकि ये freely move कर सके. होगा क्या कि अब ये पेंडुलम अपनी राइट साइड से पहले डाउनवर्ड टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, फिर ये दोबारा लेफ्टवर्ड ट्रेवल करेगा. When it will reach the uppermost side on the left side, ये momentarily stop करेगा और फिर ये दोबारा अपने backwards ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा. जब ये पेंडुलम दोबारा अपनी राइट साइड पर हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा, तो that complete motion is called one oscillation. Okay? Each complete to and fro motion is one oscillation. और ये लेंथ कवर करने में एक पेंडुलम को कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड के लिए हम जो लेटर यूज करते हैं वो है कैपिटल टी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हम स्टॉप वॉचेस को किस तरह रीड करते हैं. A stopwatch is used to measure the time taken for a runner to complete a lap of a 400-meter track. The diagram below gives the readings on the stopwatches at the start and end of the lap. This is the time at the start of the lap, and this is the time by the end of the lap. Calculate the time taken to complete the lap. हमने देखना है कि वो लैप कंप्लीट करने में रनर को कितना टाइम लगा था. आपको जब भी क्वेश्चंस में चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स इस तरह की चीज गिवन होगी, सबसे पहले आपने उनकी हेडिंग्स देखनी है. अभी नोट्स में तो हमारे पास इजियर एग्जांपल्स हैं. इन द क्वेश्चन इट कैन गेट अ लिटिल हार्ड. इसलिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपके ये हेडिंग्स में क्या है. वी हैव टाइम इन मिनट्स, सेकंड्स एंड सेंटीसेकंड्स. ठीक है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टार्ट टाइम फॉर द लैप. स्टार्ट में स्टॉपवॉच वाज ऑलरेडी एट 55 seconds and 10 centiseconds. सेकंड स्टेप आपने देखना है कि एंड में क्या टाइम था. एंड में टाइम इज 1 minute 45.10 seconds. Now what you're going to do is that you have to subtract the initial time from the end time. आप अपने इस टाइम को, इंटायर टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो. जब आपके पास पूरी वैल्यू सेकंड्स में होगी तो यू कैन इजीली सब्ट्रैक्ट दोज वैल्यूज. तो 1 minute को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? We will just simply add 60 into 45. That is right. We'll add 60 into 45. So 1 minute is equals to 60 seconds. तो हम क्या करेंगे, हम 60 plus 45.10, don't forget the 0.10, and that will be 105.10. Now we can subtract them. Final में से अपनी initial reading को subtract करें and we'll end up with 50 seconds. अब हमने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं. हमने देखा कि हम कैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, हम कैसे रीडिंग्स लेते हैं, और हमने देखा कि जब हम रीडिंग्स लेते हैं तो एरर्स भी आते हैं. हमने पैरालेक्स एरर अभी देखा था, एंड देन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एरर्स जब हम लोग मैनुअली रीडिंग्स ले रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टॉप वॉच से रीडिंग लेते हैं तो उस मैनुअल ऑपरेशन से हमारे पास एक रैंडम एरर आता है जिसको हम ह्यूमन रिएक्शन टाइम कहते हैं. यानी कि स्टॉप वॉच स्टार्ट और स्टॉप करने में जो टाइम लगता है, that is a human reaction error या फिर human reaction time. अब हम उस टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपनी रीडिंग्स को कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर अस टू ऑलवेज हैव डिजिटल मीन्स ऑफ taking measurements. हर वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स
डेटा लॉगर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेस मौजूद नहीं होती। सो वी हैव टू फिगर आउट अ वे कि जो हम मैनुअल रीडिंग्स लेते हैं उनको हम कैसे एक्यूरेट बना सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका जो कि हम नॉर्मली लैब में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड टेकिंग एन एवरेज ऑफ दोज रीडिंग्स। क्या मतलब है इस बात का कि आपने एक चीज़ की मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है और फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ही चीज़ की 10 रीडिंग्स ली हैं, सो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ रीडिंग्स, बेशक वो 10 है 20 है जितनी भी आपने ली है, divided by the number of readings. I'll highlight this formula for now and discuss the examples. पहले हमारे पास एग्जाम्पल है कि we're trying to calculate the thickness of one piece of paper. अब एक पेपर की थिकनेस तो हम एक रूलर से मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि हमने सीखा था कि रूलर की प्रिसिजन यानी कि मिनिमम मेजरमेंट रूलर कर सकता है 1 मिलीमीटर की। अब पेपर की थिकनेस तो 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती है। आप कैसे एक रूलर से पेपर की थिकनेस, वन पेपर की थिकनेस फाइंड करोगे? दैट इज इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि वी टेक अ स्टैक ऑफ पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल 100-200 पेपर्स आपने ले लिए, जितने भी आपके लिए आसान है उनको अरेंज करना और उनकी रीडिंग लेना। आपने 100 पेपर्स लिए, उनका एक स्टैक बनाया एंड देन यू यूज्ड योर रूलर टू टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस एंटायर स्टैक। हमारे पास टोटल रीडिंग कितनी आई है स्टैक की? 100 पेपर्स की रीडिंग हमारे पास आई है लेट्स से 23 मिलीमीटर्स। अब ये 23 millimeters is the sum of the thickness of all the papers. This is the sum of the readings. इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रीडिंग्स से। कितने पेपर्स हैं हमारे पास? 100 पेपर्स हैं। इन 100 पेपर्स की थिकनेस को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास एक पेपर की थिकनेस आ जाएगी, that is 0.23 mm. What is the point here? To make the reading accurate, I will take the measurement of the thickness of 100 papers. In 100 papers की thickness measure करके मैं उसको 100 से divide करूँगी, तो I will get the thickness of one paper. 23 is just an example. It's not like it's always going to be 23. This is just an example number. 23 मेरे पास आई इस पूरे 100 papers की thickness. मैंने इसको 100 से divide किया तो मेरे पास फिर एक paper की thickness आ जाएगी. It's just like अगर आपके पास 5 candies है और आपने 5 स्टूडेंट्स को कैंडीज देनी है, तो आप उसको 5 को 5 से डिवाइड करोगे ना, तो 1 स्टूडेंट के पास फिर 1 कैंडी आ जाएगी। दिस इज द वे वी सिंपली डिवाइड थिंग्स टू गेट द थिकनेस ऑफ वन पीस ऑफ पेपर। अब ये जो एग्जांपल है ये आपके पास काफ़ी कॉमन है, हम लैब में भी काफ़ी दफ़ा वी हैव टू डू दिस, इवन इन द एटीपी यू कैन राइट दिस पॉइंट कि आप अपनी मेजरमेंट्स को कैसे एक्यूरेट कर सकते हो। जब हम अपने पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड होता है वन ऑसिलेशन के लिए, एक पेंडुलम को कितना टाइम लगे वो उसका टाइम पीरियड है। लेट्स से कि मैं पेंडुलम को टुवर्ड्स द राइट साइड एक्सट्रीम पर ले जाती हूँ एंड देन आई लीव इट और इट ट्रेवल्स टू द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड देन कम्स बैक टू द राइट एक्सट्रीम। ये वन ऑसिलेशन है। अगर मैं वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड रिकॉर्ड करती हूँ, मैं यहाँ पर इस पोजीशन पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट करती हूँ और जब वो दोबारा इस पोजीशन पे आता है तो उसको स्टॉप करती हूँ। दैट विल बी द टाइम पीरियड व्हिच विल बी फॉर वन ऑसिलेशन। अब देखो कि स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने में और स्टॉप करने में मेरे पास ह्यूमन रिएक्शन टाइम ऐड हो जाता है और इस मेजरमेंट में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। वो ह्यूमन रिएक्शन एरर आपकी रीडिंग को इनएक्यूरेट बना देगा। अब उस ह्यूमन रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करने के लिए और अपनी रीडिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए व्हाट डू? वी टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स। हम एक ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम 10 से 20 स्विंग्स का टाइम रिकॉर्ड करते हैं एंड देन we divide that by the number of swings. अगर हमने 10 स्विंग्स का टाइम रिकॉर्ड किया है तो हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास आ जाता है वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। अगर हमने 20 स्विंग्स का टाइम रिकॉर्ड किया है तो हम उसको 20 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास फिर टाइम पीरियड आ जाएगा फॉर वन ऑसिलेशन। सो टाइम टेकन फॉर
the 10 swings divided by the number of swings will be the time taken for one swing. Well, can we take 5 to 6 We can swings? take 5 to 6 swings, लेकिन it's not preferable. Lab situation में या फिर lab environment में we prefer at least 10 swings. उससे नीचे से फिर आप कह लो कि accuracy उतनी ठीक नहीं होगी. 20 जो है वो ideal है. 10 Yes. भी ले लेते हैं, but 20 is ideal. So we can make a measurement as accurate as possible. आपने बिल्कुल अपनी आई को भी परपेंडिकुलर रखना है पेंडुलम से कि आपको अच्छे तरीके से नजर आए कि आपका पेंडुलम एक्सट्रीम्स पर था तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया और फिर स्टॉप वॉच स्टॉप करनी है. उससे पहले आपने स्टॉप नहीं करनी. वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव एज मच एज पॉसिबल. अपनी तरफ से 100% करना है. एंड देन taking multiple readings is the second way जिससे हम लोग एरर को रिड्यूस करते हैं. आपका एरर कभी भी 100% खत्म नहीं हो सकता. We can only try to reduce it as much as possible. Now we're going to move to the next section कि हम वेक्टर्स को कैलकुलेट किस तरह करते हैं. हमने पढ़ा था कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. अब हम उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स में और कैलकुलेशंस में. उसको विजुअलाइज करने के लिए वी हैव कम अप विद द एरो विजुअलाइजेशन. हम यूज करते हैं एरोस. एरो की जो लेंथ है ये हमें बताएगी कि हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, और ये एरो हेड की डायरेक्शन हमें बताएगा कि हमारा वेक्टर, हमारी वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. For our convenience, in this section, I will take force as the example of vector, क्योंकि हमने ऊपर identify भी किया था कि force is a vector quantity. तो यहाँ पर बार बार vector कहने के बजाय I'll be using the word force. ठीक है. अगर मेरे पास force एक ही plane में act कर रही है, यानी कि I hope you guys understand what a plane is. For example, in the x-axis. तो I will say कि ये forces, ये vectors parallel हैं. Right? Parallel lines are lines that are never going to touch each other. यहाँ पर मैं example लूँगी एक force की. Let's say I have a wooden block और इस पर दो forces act कर रही हैं. There is a 3 newtons force acting on it and there is a 5 newtons force acting on it. We're also going to assign the directions signs. Right side पर जो vectors act करेंगे I will call them positive. और जो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे आई एम गोइंग टू गिव देम द साइन नेगेटिव. अगर मेरे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल ऐड देम 3 plus 5 8 न्यूटन्स. यहाँ पर मेरे पास थे तो दो वेक्टर्स, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, they both will have a combined effect of 8 newtons towards the right. ये दोनों फोर्सेस मिलकर 8 न्यूटन्स का इस पे धक्का लगाएंगे आप कह लो, तो ये बॉक्स राइट साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगा. अगर मेरे पास यही बॉक्स है, 5 न्यूटन फोर्स राइटवर्ड्स एक्ट कर रही है मेरे पास, इस सिचुएशन में व्हाट विल आई डू? रिमेंबर, it is a misconception कि हम इनको subtract करते हैं. Vectors कभी भी minus नहीं होते. Vectors are always added. What happens is this very point जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था. Let me add them first of all. So I'm going to add the two vectors eventually. लेकिन मैंने आपको कहा था कि right side पर जो vector act करेगा उसकी direction मैंने positive लेनी है, left side वाली की मैंने negative लेनी है. So what will happen here? This is positive, this is negative. Right side वाले को मैं positive 5 लूँगी, but left side वाले को I will take it as negative 3. Then automatically it is going to give me a subtraction operation. It will become 5 plus minus minus 3. And I'll get a 2 newtons force. Now, can someone tell me कि resultant force right side पर होगा कि left side पर? Right.
That is right. क्योंकि right side वाली हमारी force is bigger. So it is going to act in the right side. So the resultant force is 2 Newton towards right. अपनी आसानी के लिए आपने जब कैलकुलेशंस करनी है तो आप सिंपली अगर आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन पैरेलल हैं तो आप उसको माइनस कर लेना बट रिमेंबर फॉर एक्चुअल रियल कॉन्सेप्ट के वेक्टर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते करते हम ऐड ही हैं लेकिन क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है वी टेक इट एज नेगेटिव ओके नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट नॉन पैरेलल वेक्टर्स we have 3 typical types of vectors यहाँ हमारा वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है v और मैं इसके साथ एक छोटा सा h लिखूंगी as a subscript and that means it is a horizontal vector. The vertical direction and I will label it as capital V with a subscript small v, vertical vector. यहाँ पे the third situation can be a vector will be at an angle to the horizontal. अगर ये मेरा horizontal axis है this vector can be at an angle to the horizontal. ठीक है? Upwards भी हो सकता है and it can be downwards as well. Over here. So it can be at an angle theta to the horizontal. Okay? I will have 3 types of vectors. या तो वो horizontal direction में होगा या vertical में होगा or else it will be at an angle theta to the horizontal. It can be in this direction, this direction, this direction, or even this direction. चारों situations में it is at an angle theta to the horizontal. अब आप देखोगे ये force A और force B ये parallel नहीं है. They're not in the same axis. एक हमारे पास x axis में है दूसरा हमारे पास y axis में है. One more thing about these two particular forces is कि ये दोनों perpendicular हैं. There is a 90 degrees angle between them. जब हमारे पास perpendicular forces होती हैं तो हम उनके effect को combine करके एक resultant force यहाँ पर एक resultant vector दे सकते हैं. Vectors that are at right angles to each other, they can be combined into one resultant vector. I will repeat the entire point just in a minute. Okay, let me start from here. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 types के vectors होंगे. Parallel vectors, non-parallel vectors. जो कि एक ही plane में होंगे, we call them parallel vectors. Horizontal vectors भी हो सकते हैं, vertical vectors भी हो सकते हैं. अब से I'll be using the word force actually. हमारे पास horizontal parallel forces भी हो सकती हैं और vertical parallel forces भी हो सकती हैं. They can be in the same direction या फिर वो opposite direction में भी हो सकती हैं. जब वो same direction में होती हैं तो हम उनको add कर लेते हैं. और जब वो opposite direction में होती हैं तो for ease we can just say कि हम उनको subtract कर लेते हैं. Likewise for the vertical vectors. लेकिन कुछ vectors होते हैं जो कि parallel नहीं होते. They are at angles to each other. जैसे कि हमारे पास ये horizontal vector है और एक vertical vector है. ये दोनों parallel नहीं है. They are at an angle of 90 degrees to each other. हमारे पास जब वेक्टर्स आते हैं ये फोर्सेस आती हैं जो कि 90 डिग्रीज पे होते हैं एक दूसरे से तो हम उनको कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते हैं लाइक दिस. इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट है वो इन 2 फोर्सेस के इफेक्ट का सम है या फिर इन 2 फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट मिलकर इस वेक्टर को बनाता है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है और एक फोर्स है टुवर्ड्स द राइट और एक फोर्स है टुवर्ड्स द नॉर्थ. एक पर्सन इसको राइट साइड पर पुल कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है. अब ये बॉल ना तो राइट साइड पर जाएगा ना नॉर्थ में जाएगा. इट विल गो समवेयर इन बिटवीन. इज दैट राइट? Yes. यस. तो अब ये जो मेरे पास 90 डिग्रीज पर फोर्सेस थी इनका एक कंबाइंड इफेक्ट है और इस कंबाइंड इफेक्ट को आई कॉल द रिजल्टेंट
force or the resultant vector. So what we have learned here is that vectors at right angles to one another can be combined into one resultant vector. And this resultant vector will have the same effect as the two original vectors. ठीक है? अब हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना एक, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मैंने ये सब क्या बोला है। ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना आपने स्टेप्स याद कर लेने हैं, ठीक है? दो तरह के हमारे पास मेथड्स होंगे वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए। एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड होगा और दूसरा सिंपल कैलकुलेशन से होगा। अगर आपको क्वेश्चन खुद कहे कि ग्राफिकल मेथड से आपने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है या सॉल्व करना है, फिर आपने ये मेथड यूज करना है, वरना हम दूसरा मेथड यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। लेट्स लर्न दिस वन फर्स्ट। कैलकुलेटिंग वेक्टर्स ग्राफिकली। जब आपको ये वर्ड नजर आएगा ना ग्राफिकली, सो यू आर गोइंग टू गेस एट फर्स्ट कि इधर आपको कोई स्केल यूज करना पड़ेगा अपने वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपके पास शार्प पेंसिल, रूलर और प्रोट्रैक्टर होना बहुत जरूरी है, पेपर में जरूर लेकर जाइएगा। ओके, लेट मी रीड दीज 7 स्टेप्स टू यू फर्स्ट। और ये स्टेप्स पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी इनको हम किस तरह से अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, and they will make a lot more sense to you guys once we do an example. The first step is choose a scale which fits the page. Number 2, draw the vectors at right angles to one another. Number 3, complete the rectangle. Number 4, draw the resultant vector diagonally from the origin. Number 5, carefully measure the length of the resultant vector. Use the scale factor to calculate the magnitude. And finally, use the protractor to measure the angle. We'll use the same steps जो कि हमेशा सेम रहेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। You will only have to use those steps. क्वेश्चन पढ़ने का पहला रूल, I always repeat it and I'll keep doing that. Mark your important information the first time that you read the question. बार-बार क्वेश्चन पे आके टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। A journey consists of 2 displacements. The first is 500 meters. Remember, we make boxes around values and underline that information. First is 500 meters in the northerly direction, and the second is 200 meters in the easterly direction. In the space below, draw to scale. जब आपको ये वर्ड मिल गया ना, draw to scale, this is an indication कि आपने graphical method use करना है, जो कि मैं आपको सिखाने लगी हूँ. Draw to scale a vector diagram of these displacements. State the scale of your diagram. On your diagram, show the 2 displacements and the resultant displacement. Determine the magnitude and direction of resultant. किसकी बात करें? क्या बताना है हमने? Magnitude और direction? Resultant की बतानी है. All right. Let's look at the first step. सबसे पहला step है choosing the appropriate scale जिससे जो diagram है it will fit the page. We need to make sure कि हम जो diagram बनाएंगे ना तो वो बहुत बड़ी हो ना वो बहुत छोटी हो. It needs to be perfect to fit the page right. ठीक है? मैं इसको highlight कर देती हूँ. पहला step है scale choose करना. 500 meters or 200 meters है. I will even write a summary of the steps here साथ साथ. The first step is scale. ठीक है? Maximum मेरी 500 है, minimum 200 है. So I have space for about 19 centimeters on my screen. अब scale क्या होता है कि ये जो displacement 500 meters है, अब आप जाहिर है इतने से पेपर पे मैं 500 meters की लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकती ना. I need to figure out a scale कि मेरे पेपर पे for example 5 centimeters represent कर रहा है 100 meters. ठीक है? That will be my scale. अगर मेरे पास यहाँ पर 19 centimeters available है,
space. So I would have to draw my diagram somewhere around here. इतनी सी बन जाए. So let's say 3 centimeters represent करता है 100 meters को. Second step क्या है? Draw the vectors at right angles to one another. Let's draw the vectors. हमारे पास एक वेक्टर है नॉर्थ डायरेक्शन में 500 मीटर्स का. दूसरा वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर्स का. ठीक है. अब मैंने कहा था कि 100 मीटर रिप्रेजेंट करता है 3 सेंटीमीटर्स को. अगर मैंने पहले नॉर्थ में अपना बनाना है वेक्टर, अगर 3 सेंटीमीटर्स रिप्रेजेंट करता है 100 मीटर्स को, तो 500 meters के लिए how many centimeters will there be? 5 multiplied by 3. Is that right? Yes. Yes. So I will draw a line of 15 centimeters here in the north direction. 0 से लेकर 15 तक. I drew a line in the north direction और ये represent कर रही है मेरे पास 500 meters. The second vector is 200 meters in the east direction. अगर 100 meter 3 centimeters है, तो 200 meters कितने centimeters होगा? It will be 6 centimeters. सबसे पहले आपने स्केल पिक किया, फिर आपने अपने वेक्टर्स एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर बना लेने हैं, क्योंकि आपने पहले स्केल पिक कर लिया था. 300 centimeters is 100 meters. अगर 100 meters 3 centimeters है, तो 500 meters कितने centimeters होंगे? We will multiply that by 3. 5 3 times 15. ठीक है. तो हमने 15 centimeters की लाइन ड्रॉ की for 500 meters. नेक्स्ट हमारे पास 200 meters का डिस्प्लेसमेंट है in the east direction. अगर 100 meter शो करता है 3 centimeters, तो 200 meters उसका डबल होगा, यानी कि 6 centimeters. तो अब मैं ईस्ट डायरेक्शन में 6 centimeters की लाइन ड्रॉ करूंगी. ठीक है. मैंने अपनी दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली in the north direction and in the east direction. Have you guys seen कि मैंने दोनों को perpendicular बनाया एक दूसरे से at 90 degrees. ठीक है. So the first step is done, which was to choose an appropriate scale. Second step is also done. Draw the vectors at right angles to one another. The third step is complete the rectangle. आपने rectangle को complete करना है, यानी कि आपने ऐसी ही एक लाइन इसके सामने बना लेनी है और नीचे वाली जैसी सेम लाइन उसके सामने बना लेनी है और अपना रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट कर लेना है. Ma'am, this line should be dotted. Yes, you can draw it dotted. It's just to differentiate that we're completing the rectangle and it's not the actual vectors we're referring to, and to just show that we're using this rectangle method of drawing vectors. आपके पास पेपर में ज़ाहिर है डॉटेड लाइन बनाने का इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप इसको सिर्फ इसको डार्क सॉलिड लाइंस बना लो और इसको लाइट colored की लाइंस बना लो. That will help you differentiate as well. Fourth step is draw the resultant vector diagonally from the origin. ये हमारा origin है और हमने यहाँ से diagonally vector को अपने resultant vector को draw करना है. It will go from here to this diagonal and we will draw double arrows on this to represent that this is the resultant vector. We're done with the fourth step. Next step हमारे पास क्या है? Carefully measure the length of the resultant vector. फिर आपने अपने ruler से ही दोबारा से इस length को measure कर लेना है. Make sure you don't make the parallax error. अपनी जो reading है, अपनी eye को perpendicular रखना है to your reading. So it's coming out to be about 16 centimeters.
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? यूज द स्केल फैक्टर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो हमारे उसकी डायग्राम पे रीडिंग आई है। Now we're going to use this scale to convert this reading into the actual displacement. क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछी है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेंटीमीटर्स में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अपना स्केल फैक्टर यूज करेंगे and we'll convert this into meters. If 3 centimeters is 100 meters, what will 6 centimeters be equal to? Can someone calculate that for me and tell me the answer? 200. Okay, let me see. The answer is coming out to be 533.3. 533.33. How did I do that? जब आपके पास इस तरह का रेशियो आ जाता है ना, तो how we do it, we cross multiply them. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, रेशियो की जगह इक्वल का साइन, 16 into 100, 1600. X is equals to 1600 by 3, 533.33 meters. Now, since it's a vector quantity, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए. डायरेक्शन हम किस तरह बताते हैं? We'll see that in the next step. Now, the seventh step is use a protractor to measure the angle. Angle हमें बताएगा हमारे वेक्टर की डायरेक्शन. This angle here is 68 degrees. अगर ये 68 है, so this will be 22. Now I can write this in two ways. I can either write 68 degrees north of east, or I can write 22 degrees east of north. Okay? If it's going towards east, I'll say east first and then off north. Ma'am, but we have both. Yes, we have both. So you guys can write any one of two. All right. So what is the scale here? The scale is 3 centimeters equals 100 meters. Next, मेरे resultant का size कितना आया? 533.33 meters. Don't forget to write this meter. Direction क्या है? 22 degrees east of north. You guys can write any one of these two. I wrote 22 degrees east of north, and that will get you your 3 marks. The last part and the last section of today's class is this part B. Another journey covers a distance of 700 meters. Describe how it is possible that this journey has no resultant displacement. अब आप देखो कि उसने distance cover किया 100 meters का. I'll draw a little visualization for this, a diagram little. Let's say ये थी point A था, इसने अपनी journey यहाँ से शुरू की है, और इसका ये distance है सारा. And this distance is 700 meters. लेकिन इसकी displacement कोई नहीं है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन हो लेकिन उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट ना गिवन हो, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो जितना मर्जी घूम जाए, वो वापस उसी पॉइंट पे आके उसने अपनी जर्नी खत्म की है. इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट हम जीरो कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्लैनेट अर्थ है, वो सन के अराउंड इट कीप्स रिवॉल्विंग, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि वो अपने ऑर्बिट से कहीं नहीं जा रहा. It keeps orbiting and coming back to its original position. That is why the displacement of the Earth is also zero. So remember, guys, whenever an object ends its journey at the same point where it started the journey, displacement equals to zero.